हाय गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं व्लादिमीर नाबोकोव्स द गिफ्ट। दिख गया। तो ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं और अभी हम इसके पेज नंबर 186 पे हैं। बट इट डजेंट मैटर अगर आपने पहले की कोई स्ट्रीम मिस कर दी हो या स्टार्टिंग से ना पढ़ी हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना, दिस इज़ अबाउट एंजॉइंग जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो वी विल गिव यू कंटेक्स्ट, ठीक है। तो अभी तक का कंटेक्स्ट ये है कि वैसे भी ये ज़्यादा प्लॉटी बुक है नहीं, तो इसमें प्लॉट वाइज ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अभी तक का ये कंटेक्स्ट है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है इसका नाम है फ्योडोर। वो एक रशियन बंदा है जो बर्लिन में रहता है 1920s में, और वो एक राइटर है। तो वो राइटिंग करता है और मतलब उसने एक पोएम की बुक लिख दी है ऑलरेडी, और ज़्यादा लोगों ने खरीदी नहीं है पर। और फिर वो ऐसे ही चिल मारता है, राइटर टाइप की हरकतें करता है, इधर उधर घूमता है, चीज़ों को देखता रहता है। और अभी वाली जो करंट स्टोरी चल रही है, जो हमने लास्ट एपिसोड में भी थोड़ी सी पढ़ी थी, वो जिस घर में वो रह रहा है रेंट पे, उनकी बेटी से उसका थोड़ा सा चक्कर टाइप का चल रहा है। उस बेटी का नाम है जीना। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो लास्ट एपिसोड के बाद मैंने थोड़ा सा आगे का भी पढ़ लिया था, तो जीना का ही डिस्क्राइब हो रहा था। जीना बेसिकली उसके लैंडलॉर्ड की सौतेली बेटी है, मतलब जीना की मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। तो और उसका लैंडलॉर्ड थोड़ा इरिटेटिंग है। लैंडलॉर्ड को भी शायद जीना पे थोड़ा बहुत ये है, क्रश टाइप का, बट दैट इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम आगे पढ़ सकते हैं, है ना। देखते हैं क्या होता है। एक चीज बोलना है। बोलो। आई वॉज एडिटिंग फर्स्ट एपिसोड। उसमें ओके, बिफोर दैट वी हैड ए मोमेंट वेयर बहुत सारा पोलिटिक लिख दिया इसने, एंड आई वाज लाइक क्या कहना चाहता है। और ये शी टोल्ड कि he was trying to be romantic and I didn't get that context at all. फिर when I went back to that first while editing that first episode, वहाँ पे विकिपीडिया हम देख रहे थे, उसमें लिखा था कि लव स्टोरी होगा, एंड आई थॉट कि अच्छा इसमें लव स्टोरी भी होगा, और सेकंड एपिसोड में ही ये हुआ, एंड आई डिड नॉट हैव दैट कॉन्टेक्स्ट एट ऑल। That's stupid I am. Not paying attention, Rahul. Yes, yes. चलो अब तुम पे अटेंशन करना। अब जीना और उसका चल रहा है कुछ कुछ, तो जीना की लाइफ को और ज्यादा डिस्क्राइब किया जा रहा है। अभी के 2-3 पेज मैंने पढ़ लिए थे, तो उसमें कुछ था नहीं। उसमें बस वही था कि जीना जो है वो सौतेली बेटी है, उसका पहले पापा मर गए थे, दूसरा ये जो लैंडलॉर्ड है उसका सौतेला बाप है। और वो जो सौतेला बाप है इज अ वेरी इरिटेटिंग पर्सन। वो घर में अकेला रहता है तो बोर होता रहता है, और फ्योडोर को डिस्टर्ब करता रहता है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, और उसको अपनी बोरिंग कहानियां सुनाता रहता है। दैट इज इट। और जो जीना, मतलब जीना की जो जीना का सौतेला बाप है, जो लैंडलॉर्ड है, वो उसके जीना के बाप को बहुत ही नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करता है फ्योडोर के सामने, कि उस जीना की मम्मी जो थी वो तो फंस गई थी उसके साथ, पता नहीं कैसे शादी कर ली उसने उससे, ये वो। बट जो जीना है वो फ्योडोर के सामने अपने पापा की बहुत तारीफें करती है, कि मतलब ऐसे फोटो वोटो दिखा के। तो फ्योडोर थोड़ा कंफ्यूज सा रहता है कि किसकी बात सुने। बट एनीवेज, बट ये मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था व्हाइल रीडिंग दिस पार्ट, कि फ्योडोर को कुछ गुस्सा नहीं आता। मतलब फ्योडोर डजंट केयर कि उस जो लैंडलॉर्ड है वो उस जीना के पापा की बुराई कर रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं होता। वो तो बल्कि ये बोलता है कि जीना के अंदर कुछ ज्यादा ही प्राइड है अपने ज्यू होने की या समथिंग समथिंग। तो उसको वो नहीं है कि जीना को प्रोटेक्ट करना चाहता है हर उसमें, ऐसा कुछ नहीं है उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। At home, she was unhappy. She is Zina. And this unhappiness she despised. She also despised her work, even though her boss was a Jew. Even though her boss was a Jew, क्योंकि वो खुद Jew है और उसको Jews पसंद है in general. However, a German Jew, that is first of all a German, but उसको German लोग नहीं पसंद. So that she had no qualms about abusing him in Fyodor's presence. So vividly. पटाखे की आज कुछ है नहीं, ब्रेकअप हुआ है शायद किसी का। ठीक है, good. So vividly, so bitterly, and with such revulsion did she tell him about that lawyer's office, where she had already been working for 2 years, that he saw and smelled everything as if he himself were there every day. बहुत खुशी है किसी को अपने ब्रेकअप की, हम भी थोड़ी देर खुश हो लेते हैं कुछ सोच के।
It's fine. खुशी तो खत्म हो गई, hopefully. या फिर किसी का शादी हो सकता है। शादी भी हो सकता है, शादी makes more sense. तुम्हारा ब्रेकअप होगा तो तुम पटाखे जलाओगे क्या? नहीं, मैं तो जोक कर रहा था। वाह, very funny. शायद जला सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ टॉक्सिक शी वाज। अच्छा, ठीक है. Let's see if Zina is toxic though. बस। ठीक है, तो ये अपने बॉस की बुराई कर रही है. So vividly, so bitterly, and with such revulsion did she tell him about that lawyer's office where she had already been working for 2 years, that he saw and smelled everything as if he himself were there every day. The atmosphere of her office reminded him somehow of Dickens, a semi insane world of gloomy, lean men and repulsive, chubby ones. Subterfuge, black shadows, nightmare snouts, dust, stench, and women's tears. It began with a dark, steep, incredibly dilapidated staircase, which was fully matched by the sinister decrepitude of the office premises, a state of affairs not true only of the chief barrister's office, with its overstuffed armchairs and giant glass topped table furnishings. The main office, large, plain, with bare, shuddering windows, was choked with an accumulation of dirty, dusty furniture. Especially dreadful was the sofa, of a dull purple color with protruding springs, a horrible, obscene object dumped here after gradually passing through the offices of all three directors, Traum, Baum, and Casebeer. The innumerable shelves blocking every inch of wall were crammed with grim blue folders that stuck out their long labels, along which from time to time crawled a hungry litigious bedbug. By the windows worked four typists. One was a hunchback who spent her salary on clothes. The second was a slender, flighty little thing whose father, a butcher, had been killed with a meat hook by his hot-tempered son. Acha, the second was a slender, flighty little thing whose father, a butcher, had been killed with a meat hook by his hot-tempered son. The third was a defenseless young girl who was slowly collecting a trousseau, and the fourth was a married woman, a buxom blonde, whose soul was little more than a replica of her apartment, and who recounted movingly how, after a day of spiritual labor, she felt such a thirst for the relaxation of physical work that upon coming home she would throw open all the windows and joyously set about the washing. The office manager, Himek, a fat, coarse animal with smelly feet and a perpetually oozing furuncle on the nape, who liked to recall how in his sergeant days he had made clumsy recruits clean the barrack room floor with toothbrushes, used to persecute the latter too with particular pleasure. One, because the loss of her job for her would have meant not getting married, the other, because she forthwith began to cry. Those abundant, noisy tears, which were so easy to provoke, afforded him wholesome pleasure. Hardly literate, but gifted with an iron grip, immediately able to grasp the most unsavory aspect of any case, he was highly prized by his employers, Traum, Baum, and Casebeer, a complete German idyll with little tables amid the greenery and a wonderful view. Baum was rarely to be seen. The office maidens found that he dressed marvelously, and in truth, his suit was as rigid as on a marble statue, with everlastingly creased pants and a white collar attached to a colored shirt. Casebeer cringed before his prosperous clients. For that matter, all three of them cringed. But when he grew angry with Zena, he accused her of putting on airs. The boss Traum was a shortish man with hair distributed in such a way as to conceal his bald spot, with a profile like the outside of a half moon, tiny hands, and a shapeless body, more wide than it was fat. He loved himself with a passionate and completely reciprocated love, was married to a rich elderly widow,
and having something of the actor in his nature, strove to do everything in style, spending thousands for show and haggling with his secretary over a nickel. He demanded of his employees that they refer to his wife as Die gnädige Frau, the Mrs. telephoned, the Mrs. left a message, and plumed himself on a sublime ignorance of what went on at the office. Although in fact he knew everything through Hemek, right down to the last blot. अच्छा कुछ क्या है इस बारे में किसी को अगर नाम ने पढ़ा है ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हाँ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है ये करता ही है कोई भी छोटी सी बात लेके कोई चाहे चाहे हम इस ऑफिस के बारे में इन लोग के बारे में कभी फिर से नहीं बात करेंगे इस बुक में कभी भी फिर भी ये सब कुछ बताएगा उनके बारे में। ठीक है डिकेंसियन वर्ल्ड डिकेंसियन वर्ल्ड का तो मुझे उतना अच्छे से नहीं समझ आया क्योंकि मैंने ज्यादा डिकेंस पढ़ा नहीं है बट सीम्स लाइक बहुत सैड सा और डार्क सा वो डैरन अरोनोफ्स्की टाइप वर्ल्ड डैरन अरोनोफ्स्की का रिक्विएम फॉर ए ड्रीम का अच्छा आई थिंक वैसा वैसा ही लग रहा है राइट ठीक है तो काफी सैड वर्ल्ड है बॉस सारे बहुत ही रैंडम से और अजीब टाइप के लोग हैं अजीब तो नहीं मतलब थोड़े विशियस से हैं सारे इन देयर ओन वे ठीक है लेट्स सी in his capacity as one of the legal consultants to the French embassy he often traveled to Paris आई थिंक ये ही जो लास्ट वाला बंदा है उसकी बात हो रही है लास्ट पार्टनर जो था जो बहुत ज्यादा ड्रेस करता था और अपनी वाइफ को बोलता था ट्राउम वाज द बॉस आई थिंक सारे पार्टनर्स का सबसे बड़ा बॉस है बबलू does not like Traum. You must give Bablu space. Bablu does not like anyone except himself. He is like Fyodor. He did not find his Zina. अब तो मिल गई ना उसको डूडू अच्छा ये कौन है एक आई है नहीं ठीक है कहाँ पे है नीचे ही है ओहो रोज चल रहा है आदि सेक्स नॉइसेस थे नहीं यार दोनों ये तो न्यूटेड है उसको कराना है न्यूटेड अच्छा जस्ट रोमांटिक पार्टनरशिप अभी तो प्ले पार्टनर्स हैं बस बट तुम इतना धीरे बोलते हो तुम्हारी आवाज आएगी उसमें आएगा ओके ठीक है In his capacity as one of the legal consultants to the French embassy, he often traveled to Paris. And since his outstanding characteristic was a tremendously smooth effrontery in the pursuit of advantages, he energetically struck up useful acquaintances while there, shamelessly asking for recommendations, badgering, foisting himself upon people without feeling the snubs. His skin was like the armor on a piba. In order to gain popularity in France, he wrote little books in German on French themes. And in the course of their preparation, the collecting of materials turned into the collecting of connections. बहुत चालाक बंदा है ये तो basically. These hastily compiled works in the terrible style modern of the German Republic were dictated by him to his secretary between business, when he suddenly feigned a flow of inspiration, which flow incidentally always coincided with a stretch of leisure time. Some French professor into whose friendship he had insinuated himself once answered a most tender epistle of his with extremely blunt criticism. You write the name criticism. Bablu can't take criticism. You write the name Deschanel. अच्छा कोई आंसर आ रहा है तू साले
You write the name Deschanel at times with an accent I grew and at others without it. Since a certain uniformity is necessary here, it would be good if you were to take a firm decision as to which system you wish to adhere to and then stick to it. If for any reason you should desire to write this name correctly, then write it without an accent. तो ये फ्रेंच बंदे ने उसको बोला कि तुम कुछ भी लिख रहे हो. Traum at once responded with a rapturously grateful letter, continuing at the same time to ask for favors. Oh, how well he could round out and sweeten his letters. What Teutonic warblings and whistlings there were in the endless modulation of his openings and conclusions. What courtesies. अच्छा तो ये कोई उसने उसको बोल भी दिया कि तुम क्या लिख रहे हो उसमें भी उसने थैंक यू बोल के और फेवर ही मांग लिया. वाह. ठीक है. His secretary Dora Wittgenstein, who had worked for him for 14 years, shared a small musty office with Zena. This aging woman with bags under her eyes, smelling of carrion through her cheap eau de cologne, who worked for any number of hours and who had dried up in the service of Traum, resembled an unfortunate, worn out horse whose whole muscular system has been displaced, leaving only a few iron tendons. She was little educated, organized her life according to two or three generally accepted concepts, and in her dealings with French was guided by certain private rules of her own. When Traum was writing his periodic book, he would call her to his house on Sundays, haggle over her payment, and keep her for extra time. And sometimes she would proudly inform Zina that his chauffeur had driven her home, or at least as far as the tram stop. Zena had to work not only at translations but also, as did all the other typists, at copying out the long applications presented at court. Frequently, she also had to take down in shorthand, in the presence of a client, the circumstances of his case, very often dealing with divorce. These cases were all fairly sordid, lumps of all sorts of muck and stupidity stuck together. A person from Cottbus divorcing a wife, who according to him was abnormal, accused her of consorting with a Great Dane. Great Dane. Divorce who according to him was abnormal, accused her of consorting with the Great Dane. तो कुत्ता होता है ना. Okay. The chief witness was the janitress who through the door had allegedly heard the wife talking to the hound and expressing delight concerning certain details of its organism. To To you, it's only funny, said Zena crossly. But honestly, I can't go on. I can't, and I would abandon all this scum right away if I didn't know that another office would have the same scum, or worse. This worn out feeling in the evening is something phenomenal. It baffles any description. What am I good for now? My spine aches so much that from that typewriter that I feel like howling. And the main thing is that this will never end. Because if it came to an end, there'd be nothing to eat. Mother can't do anything. She can't even work as a cook because she'd only sob in her employer's kitchen and break the dishes. And her filthy husband only knows how to go bankrupt. In my opinion, he was already bankrupt when he was born. You have no idea how I hate him. He's a swine, a swine, a swine. One could make ham out of him, said Fyodor. ये अपना प्रोटैगनिस्ट जोक मारने की कोशिश राहुल की तरह. Okay. I also had a fairly hard day. I wanted to write a poem for you, but somehow it hasn't quite cleared up yet. अच्छा लड़की को मनाने के लिए राइटर क्या ही कर सकता है पोएम ही लिख सकता है सही बात है. My darling, my joy, she exclaimed. Can all this be true? This fence and that blurry star. When I was little, I didn't like drawing anything that didn't finish. So I didn't draw fences because they don't finish on paper. You can't imagine a fence that finishes. But I always did something complete, a pyramid or a house on a hill. And I liked horizons most of all, and diminishing dashes beneath it, to represent the wake of the sun setting beyond the sea. And the greatest childhood torment of all was an unsharpened or broken crayon pencil. ये Fyodor बोल रहे हैं. And I liked horizons most of all, and diminishing dashes beneath it, to represent the wake of the sun setting beyond the sea. And the greatest childhood torment of all was an unsharpened or broken crayon pencil. But then the sharpened ones, do you remember the white one? Always the longest, not like the red and blue ones, because it didn't do much work. Do you remember?
but how much it wanted to please the drama of the albino. Anyhow, later I let it have its fill, precisely because it drew the invisible and one could imagine lots of things. In general, there await us unlimited possibilities, only no angels. Or if there must be an angel, then with a huge chest cavity and wings like a hybrid between a bird of paradise and a condor, and talons to carry the young soul away. Not embraced as Lermonotov has it. अच्छा Lermonotov तो मुझे नहीं पता कोई राइटर हो गया शायद रशियन बट कलर वाइट कलर पेंसिल के बारे में कुछ ज्यादा ही पोएटिक चीज बोल दिया इसने मुझे ऐसा लगा इट वाज लाइक टू पोएटिक फॉर मी कि वाइट पेंसिल में तो भाई कुछ भी है इनविजिबल ड्रॉ कर दिया वाइट पेंसिल ने तो ओह नो ठीक है Yes, Zina कह रही है Yes, I also think that we can't end here. I can't imagine that we could cease to exist. In any case, I wouldn't like to turn into anything. Into diffused light? What do you think of that? Not too good, I'd say. I'm convinced that extraordinary surprises await us. It's a pity one can't imagine what one can't compare to anything. It's not, it's a pity one can't imagine what one can't compare to anything. Genius is an African who dreams up snow. Do you know what it was that most amazed the very first Russian pilgrims when they were crossing Europe? The music? No. The fountains in the cities. The wet statues. Sure. Yeah, but yeah, genius is an African who dreams of snow. कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते जिस जो चीज तुमने कभी देखी ही नहीं है अच्छा लगा आई डेंट एंड बट मुझे वो वाला जो इन्होंने फ्लो लिया पेंसिल की बात करने से पर इसने फेंस के बारे में बोला कि पोएम लिखूंगा फेंस और पेंसिल से यहाँ पे कैसे आए वो मुझे उतना नहीं समझ आया कि आई ऑल्सो डोंट थिंक वी कैन एंड हियर आई कांट इमेजिन वी सीज टू एग्जिस्ट की बात क्यों करने लग गए वो वाइट पेंसिल से बट ठीक है ये अच्छा लगा ठीक है डू यू नो व्हाट दे वर अमेज्ड बाय व्हेन दे वर क्रॉसिंग यूरोप द म्यूजिक नो द फाउंटेन्स इन द सिटीज द वेट स्टैचूज It sometimes annoys me that you have no feeling for music. My father had such an ear that sometimes he would lie on the sofa and hum a whole opera, from beginning to end. Once he was lying like that, and someone came into the next room and began talking to mother, and he said to me, that voice belongs to so and so. I saw him 20 years ago in Carlsbad, and he promised to come and see me one day. That's what his ear was like. ये फिर से अपने पापा की तारीफ कर रही है करती रहती है वो एंड आई मेट लिशनेव्स्की ये टुडे बात कहाँ हो रही है ऑफिस के पास या नहीं ये लोग कहीं बाहर ही मिलते हैं ना बेंच बेंच अच्छा नाइट टाइम हो रहा है इसलिए फ्रस्ट्रेशन बोल रही है ओके And I met Lishnevsky today, and he mentioned a friend of his who complained that Carlsbad was no longer what it used to be. Those were the days, he said. You stand with your mug of water, and there next to you is King Edward. Handsome, imposing man, suit of real English cloth. Now, why are you offended? What's the matter? I think ये किसी statue की बात कर रहा है King Edward के जो side में होता है. Now, why are you offended? What's the matter? Never mind. There are some things you'll never understand. Don't say that. Why is your skin hot here and cold there? You are not cold. Better take a look at that moth by the lamp. I saw it long ago. Do you want me to tell you why moths fly toward the light? No one knows that. And you know, it always seems to me that in a minute I'll guess if I just think hard enough. My father used to say that it resembled most of all a loss of equilibrium, as when learning to ride a bike you are lured by a ditch. Light in comparison with darkness is a void. Look at it circling. But there's something deeper here. In a minute I'll get it. Oh, ये अच्छा लगा हमको. मुझे ये वाला अच्छा लगा क्या? It always seemed to me that in a minute I'll guess if I just think hard enough. Nice. क्रिटिकल थिंकिंग की बात चल रही है बट ये गुस्सा तो हुई है बीच में मुझे लग रहा है शायद इसने फादर वाली बात पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया अपनी स्टैचू वाली बात पे वापस चला गया
It always seems to me that in a minute I'll guess if I just think hard enough. My father used to say that it resembled most of all a loss of equilibrium, as when learning to ride a bike you are lured by a ditch. Light in comparison with darkness is a void. Look at it circling. But there's something deeper here. In a minute I'll get it. आई एम सॉरी दैट यू डिडंट राइट योर बुक आफ्टर ऑल। तो ये एक और बुक लिख रहा था जो कि फ्योडोर जो है जो उसके फादर से रिलेटेड थी। इसके फादर वो थे जो बग्स एंड इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। उनकी ट्रेवल्स एंड टूर्स पे लिख रहा था ये कुछ। तो बट इसने फिनिश नहीं करी थी शायद, इसलिए कह रही है आई एम सॉरी दैट यू डिडंट राइट योर बुक आफ्टर ऑल। ओ आई हैव 1,000 plans for you. I have such a clear feeling that one day you'll really lash out, write something huge to make everyone gasp. I'll write, said Fyodor Konstantinovich jokingly, a biography of Chernyshevsky. ये इसका खुद का ही नाम है, मतलब अपनी खुद की क्या रहती बायोग्राफी। She is saying. नहीं ये खुद ही कह रहा है, मैं लिख दूंगा अपनी बायोग्राफी लिख दूंगा। अच्छा okay. Anything you like, but it must be quite genuine. I don't need to tell you how much I like your poems, but they are never quite up to your measure. All the words are one size smaller than your real words. Or a novel. It's queer. I seem to remember my future works, although I don't even know what they will be about. I'll recall them completely and write them. Tell me, by the way, how do you tend to see it? Are we going to meet all our lives like this, side by side on a bench? Oh no, she replied in a musically dreamy voice. In the winter, we'll go to a dance, and this summer, when I have my holiday, I'll go to the sea for 2 weeks and send you a postcard of the breakers. I'd also go to the sea for 2 weeks. I don't think so. And then don't forget that we must meet sometime in the Tiergarten in the Rosarium, where the statue of the princess is with the stone fan. Pleasant prospects, said Priya बाहर से कहने की pleasant prospects बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं। पोयम तो इतनी रोमांटिक लिख दी थी इसने, बातें ऐसे करता है। But a few days later, he happened to come across that same copy of 8x8। ये वो वाली chess problems वाली बुक है जो ये पहले पढ़ रहा था। कहाँ वो बस में या कहीं? हाँ बस में चेस, मतलब एक चेस प्रॉब्लम्स की बुक से उठाई थी, बीच बीच में पढ़ता रहता है उसको ये। Across that same copy of 8x8, he leafed through it, looking for unfinished bits. And when all the problems turned out to be solved, उसमें problems थी solve करने के लिए, तो ये को solve कर रहा था बीच बीच में। He ran his eyes over the 2-column extract from Chernyshevsky's youthful diary. Oh sorry, Chernyshevsky ये नहीं है, बहुत कंफ्यूज आते हैं उनके नामों में। ठीक है, फ्रॉम चेरनीशेव्स्की ये नहीं है ना, ये उसका राइवल है ना, राइवल का भी ऐसे कोई कुछ नाम था ना। ये नामों में बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं मुझे। बीच में कहीं उसकी बुराई चल रही थी ना कुछ, एक सेकंड देख लें। उसका बायोग्राफी लिखने का उसको इतना हेट करता है शायद ये, तभी तो मुझे लगा इतना क्या होगा उससे ऑब्सेशन प्रोपेगेंडा करना है इसको। इतना हेट। कॉन्शियर था उसका नाम तो। हिज डिस्कशन है इसके पापा का नाम नहीं है क्या जीना? नहीं वो चेर्डिनेस्टेव है जीना के पापा का नाम। क्या? हाँ चेर्डिनेस्टेव। ओके। चेर्निशेव्स्की किसी और का नाम। वो एडिटर क्या है क्या? नहीं यार मुझे लगा शायद फ्योडोर के पापा का नाम है। एक्सक्यूज मैं देख लेती हूँ। Let's see. रशियन राइटर है कोई चेर्निशेव्स्की। एक सेकेंड। अच्छा इसका नाम भी चेर्डिनेस्टेव है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। और इसके पापा का नाम भी गोडुनोव चेर्निशनेस्टेव है कुछ तो। गॉड अच्छा
सॉरी हाँ, चेरनीशेव्स्की वो लोग हैं जिन्होंने इनको फोन करके मतलब इसकी जब पोयम वाली बुक पब्लिश हुई थी तो उन्होंने इसको फोन करके बुलाया था अपने घर कि तुम अपनी पोयम का पढ़ो, बट एक्चुअली में वो उसकी पोयम से पढ़ना चाह रहे थे, ऐसे ही उसको प्रैंक कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। और चेरनीशेव्स्की अगेन अ राइटर, और उनका वो बेटा था याशा, जिसकी हमने स्टोरी पढ़ी थी। हाँ, यस है ना? यस। तो ठीक है, बट अभी के कंटेक्स्ट के लिए लेट्स जस्ट से चेरनीशेव्स्की इज अनदर राइटर, और जिसको जो इसको जानता है और जो भी वहीं पे ही रहते हैं और जर्मनी में ही रहते हैं अभी, तो वो लोग और इसको बुलाते रहते हैं अपने घर कुछ ऐसी बातें बातें करने के लिए। तो अभी उनका याशा मर गए ना? बेटा उनका मर गया था, मर- और बेटा उनका इसके जैसा दिखता था, फ्योडोर जैसा दिखता था। हाँ, ठीक है, तो वो अपनी बुक पढ़ रहा था चेस प्रॉब्लम्स की। When all the problems turned out to be solved, he ran his eyes over the two-column extract from Chernyshevsky's youthful diary. ये उस कहाँ से मिला उसे टू कॉलम एक्सट्रैक्ट, आई डोंट नो, बुक में था या कहाँ था। He glanced through it, smiled, and began to read it over with interest. The drolly, circumstantial style, the meticulously inserted adverbs, the passion for semicolons, the clogging down of thought in mid sentence, and the clumsy attempts to extricate it, whereupon it got stuck at once elsewhere, and the author had to start worrying it out all over again. The rubbing in tone of each word, the night moves of sense in the rubbing in tone of each word, the night moves of sense in the trivial commentary on his minutest actions, the viscid ineptitude of these actions, as if some workshop glue had got onto the man's hands and both were left. The seriousness, the limpness, the honesty, the poverty, all this pleased Fyodor so much. He was so amazed and tickled by the fact that an author with such a mental and verbal style was considered to have influenced the literary destiny of Russia, that on the very next morning he signed out the complete works of Chernyshevsky from the State Library. And as he read, his astonishment grew, and this feeling contained a peculiar kind of bliss. अच्छा, ठीक है, ये पहले क्यों नहीं इसने चेरनीशेव्स्की को डिस्कवर किया ये नहीं पता, बट कर लिया उसने इसे डिस्कवर, बहुत ही मजा आया उसको पढ़ के। ये अभी फ्लैशबैक बोल रहा है ना? फ्लैशबैक कहाँ बोल रहा है ये? फ्यू डेज लेटर जब वो अपनी बुक पढ़ रहा था तब इसका वैसा वो। एंड बिफोर ही इवन डिस्कवर्ड हिम ही वाज ताने मार रहा था उसका बायोग्राफी लिखूंगा बोल के। हाँ, उसका बायोग्राफी लिखूंगा। हाँ, तो चेरनीशेव्स्की से इम्प्रेस तो है ये, बट अभी एकदम से उसने सोचा कि अरे मैं इसकी बुक सारी पढ़ लेता हूँ, ये ऐसा अभी क्यों हुआ ये नहीं पता। ठीक है, जीना बोली ना। जीना ने क्या ही बोला, जीना ने तो बोला कुछ अच्छा लिखो, अच्छा जीना ने ऐसा बोला। When a week later he accepted a telephone invitation from Alexandra Yakovlevna. Why does one never see you? Tell me, are you free tonight? He did not take 8x8 with him, वो puzzle वाली book, to show to his friends. This little magazine now had a sentimental value for him. The memory of an encounter. अच्छा, उस मैगजीन में ही उसको चेरनीशेव्स्की का वो मिला जो भी है, यूथफुल डायरी का कुछ एक्सट्रैक्ट मिला। अच्छा, उस मैगजीन में सिर्फ पजल्स नहीं थे, वो और भी पूरी मैगजीन थी, उसमें और भी चीजें थी। ओके, ठीक है। आई थिंक 8x8 जैसे या क्रॉसवर्ड टाइप कुछ है। नहीं, ये उस बुक को 8x8 बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों, वो जो मैगजीन है। शायद वो नॉर्मल मैगजीन में जिसमें लाइक सुडोकू और क्रॉसवर्ड देते हैं ना, वैसा हो सकता है। वैसा सा कुछ है क्या? ठीक है, इसको किसी ने तो बुलाया है अलेक्जेंड्रा याकोवलेवना ने, जो उसका कोई तो दोस्त है। ठीक है। Among the guests there he found the engineer Kern and a capish। ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर आई थिंक फिर ये एक बहुत ही फिर से एक मीटिंग होने वाली है जिसमें 20 करोड़ लोग होने वाले हैं फिर से और उन सबकी डिस्क्रिप्शन होने वाली है। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आज वाला रीडिंग में मतलब वो हमें उसकी पर्सनली मतलब मुझे उतना ऐसा लगा कि उसकी वो जो पोएटिक पावर है उतनी हमें देखने को नहीं मिली। Yes. क्योंकि आज वाली रीडिंग में ज्यादा डायलॉग ज्यादा था, Information इंफॉर्मेशन और डायलॉग ज्यादा था। बट आई थिंक ठीक है, वही है ना, ऐसे पार्ट्स भी आते हैं बुक के जो आपको करने पड़ते हैं ताकि बाकी की सही सुंदर पार्ट्स पे आप जा पाओ। बट हमारा शैडो बहुत सुंदर लग रहा है, तो आई थिंक
maybe we made up for it. Okay, but I am not narcissist, so I'm not going to comment. Oh, I am narcissist then. You're saying. ठीक है, चलेगा मुझे. और भी बना लेते हैं shadows. देख, बंदा बनाना आता है तुम्हें? बंदा ये बन ये है। हाँ, क्या कह रहे हो? जल्दी बताओ. अच्छा। क्या कह रहे हो? क्या बक रहे हो? तुम्हारा सर नीचे है. सर में लग गई क्या चोट? तेरे सर में लग गई लगता है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अकेला हूँ क्या? और कोई है? मैं हूँ. कौन है? कोई है वहाँ? मैं यहीं पर हूँ. कौन हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं आया डायलॉग, सॉरी। चलो सही है. ठीक है, हम कोई वर्ड्स देख सकते हैं आज. बक्सम। बक्सम. यस, एक मिनट, वो ब्रेस्ट के बारे में बात कर रहा था. बुजम होगा. उससे पहले ये है ब्लॉन्ड. ब्लॉन्ड, बक्सम ब्लॉन्ड. यस. अच्छा, बक्सम ब्लॉन्ड. BUXOM. लेट्स सी. Of a woman, plump with a full figure and large breasts. ठीक है, ये है फोर्थ वाली जो सेक्रेटरी थी. फोर्थ वाली जो टाइपिस्ट थी वो थी बक्सम ब्लॉन्ड मैरिड वुमन whose soul was little more than a replica of her apartment. ठीक है, मुझे देखना था सबटरफ्यूज. ये वर्ड पहले सुना तो लग रहा है बट मैं भूल जाती हूँ उसका. हमारे स्कूल में दे यूज्ड टू हैव दिस बोर्ड्स जिस पे वर्ड और मीनिंग लिखा होता है. उस पे वन ऑफ इट वाज सबटरफ्यूज, बट आई डोंट रिमेम्बर इट्स मीनिंग. तो The only thing I इतनी remember, मेमोरी याद है कि स्कूल के बोर्ड में लिखा था सबटरफ्यूज, पर मैंने आगे नहीं पढ़ा. the only word I remember from those boards is fickle-minded. अच्छा, ठीक है. इसका मतलब सबटरफ्यूज का मतलब होता है आज तुम वो मेमोरी कंप्लीट कर सकते हो. डिसीड यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव वंस गोल. तो यहाँ इसने ये बोला कि द ऑफिस रिमाइंडेड हिम सम ऑफ डिकेंस, अ सेमी इंसेन वर्ल्ड ऑफ ग्लूमी लीन मेन एंड रिपल्सिव चबी वंस. सबटरफ्यूज, ब्लैक शैडोज, नाइटमेयर स्नाउट्स. सबटरफ्यूजेस, डिसीट. ये तो लग ही रहा था इन सब की डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि अपना गोल करने के लिए डिसीट तो कर ही रहेंगे. और मुझे देखना था लिटिजियस. लिटिजियस LITI, litigious, litigation, उस टाइप का है क्या? हाँ, सही कह रहे हो. prone to engage in lawsuits or legal maneuvers especially to an excessive degree. litigious person is जो कि बहुत ज्यादा सू करे किसी को. तो ये इसने बेड बग के लिए बोला है कि वहां पे जहाँ पे फाइल्स और ब्लू फोल्डर्स रखे थे along which from time to time crawled a hungry litigious bed bug. Yes. तो एक लास्ट वर्ड मुझे देखना है. Sordid. Sordid तो आई थिंक सैड ही होता है, बट आई जस्ट वांट टू गेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. Sordid इज लाइक गीला सा कुछ. गीला सा. इसमें लिखा है डर्टी और स्क्वालिड बट ऑल्सो इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस. immoral type का. The story paints a sordid picture of bribes and scams. Sleazy, seedy, dirty. Dickensian. ये तो डिवोर्स केस के बारे में इसने बोला था. These cases were all fairly sordid. Lumps of all sort of muck and stupidity stuck together. एक लास्ट में देखना था plumed himself. Plumed. Decorated with or as if with feathers. अच्छा, decorated himself. तो इसने वो जो इसका बॉस था जिसको इसने सबसे ज्यादा डिस्क्राइब किया था, उसने बोला था कि he plumed himself on a sublime ignorance of what went on at the office, although in fact he knew everything.
Wow. ये सही था. I think I will read some more later and then I will stop at a point which we can read next time. ये क्या है? True. हाँ ये भी नहीं पता मुझे, but I don't think I will remember it even if I look it up. So I'm not looking it up. ठीक है फिर आज के लिए काफी है. आज हमने वो भी तो देख लिया ना, सब हर साइड देखनी चाहिए किसी चीज की. इतने दिनों से हम एकदम ब्यूटीफुल प्रोज पढ़ रहे थे. आज हमने ये भी देख लिया कि एकदम बोरिंग डिस्क्रिप्शंस और डायलॉग पढ़ पढ़ के भी पढ़नी पड़ती है बुक, क्योंकि आगे ब्यूटी आने वाली है. Like life. लाइक लाइफ. यस. ब्रेकअप के बाद ब्यूटीफुल फायरवर्क्स भी हो सकते हैं. इफ यू वांट. राइट. ठीक है गाइस, आज Bye. के लिए नहीं का. Bye. बाय. Bye. बस रिकॉर्डिंग